Now next characteristic feature of chemical reactions of solvent is leveling effect. The strength of acids and bases depend upon the nature of the solvent. If there is a large difference in the proton donor tendency of acid and the solvent, then the acid is about fully ionized in such a solvent and behaves as a strong acid. But if there is not much difference in the proton donor tendency of acid and the solvent, then the acid is not fully ionized. For example, like acids HClO4, Hi, HBr, HCl, HNO3 are fully ionized in aqueous solution, and all these are strong acids. The proton donor tendency of these acids is like this: HClO4, then Hi, then HBr, then HNO3, and then HCl. Since in aqueous solution all the above acids are equally strong acids, hence water is known as leveling solvent, and this property is known as leveling effect. The strength of above acids in acetic acid as solvent is expressed in the same order in which they have proton donor tendency. Hence, acetic acid is known as a differentiating solvent for these acids. Similarly, in the aqueous solution of a strong base like NaH, NaNH2, NaOH, the strength of base is expressed in a similar manner. जैसे acids के लिए क्या था उसी तरीके से base के लिए है. So, water acts as a leveling solvent for these bases, but the strength of these bases in liquid ammonia solution is different. The strength of bases in liquid ammonia solution is in the following order, like NaH, then NaNH2, then NaOH. So, liquid ammonia is a differentiating solvent for strong bases. Next characteristic feature is solvolysis. Solvolysis, the process by which a solute enters into solution by reaction with a solvent, is called solvolysis. In this process, the solvent molecule is split into two parts. दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्प्लिट हो जाता है. One or both of which become attached to a solute molecule or ion. Solvolysis generally result in an increasing concentration of either the cation or anion, which is characteristic of the autoionization of the solvent. The term hydrolysis, ammonolysis, acetolysis, and alcoholysis are applied to solvolytic reactions in water, ammonia, acetic acid, and ethyl alcohol respectively. इसके लिए एक टेबल बनाई है हमने, आप देख सकते हैं. इसमें सॉल्वेंट हमने वाटर एंड अमोनिया लिया है, जिसमें कि ऑटो आयोनाइजेशन, वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन जिसमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है, अमोनिया का ऑटो आयोनाइजेशन जिसमें अमोनियम आयन एंड NH2 माइनस आयन मिलता है. अब वाटर का सॉल्वेंट प्रोसेस विद SO2Cl2 जिसमें कि हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिल रहा है. इसी तरीके से अमोनिया का SO2Cl2 के साथ सॉल्वेंट प्रोसेस जिसमें कि अमोनियम आयन और Cl माइनस आयन मिल रहा है. तो इस तरीके से डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट टाइप से सॉल्वेंट प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज सॉल्वेशन. The interaction that takes place when a substance is introduced into a solvent is called solvation.
It is a process in which a molecule of the solvent attached itself to a solute species. Solute species may be cation, anion, or molecule by the various types of chemical bonds like ion dipole, van der Waals force, or hydrogen bonding, or maybe coordinate covalent bonding. Solvation of a cation occurs through ion dipole interaction between the positive cation and the negative end of the solvent dipole, or through coordinate covalent bonds in which the solvent molecule shares a pair of electrons with the cation. Solvation of the anion can occur through ion dipole interaction between the negative anion and the positive end of the solvent dipole, or in the case of solvents like water, ammonia, hydrogen fluoride, through hydrogen bonding with the anion. In many cases, the mechanism of solvation and structure of the resulting solvent is not known, but different type of solvation is here. Solvation reaction in which water is the solvent are called hydration reaction. If ammonia is there, ammonia is the solvent, the reaction is called ammonolysis. The resulting solvates are known as hydrates and ammoniates respectively. जैसा सॉल्वेंट उसी तरीके से उसके सॉल्वेट्स बनते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस. वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वाटर कभी भी सॉल्वेंट नहीं यूज़ होता है. While liquid ammonia cannot be used as a solvent for oxidizing agent. This is because strong reducing agents reacts with water and liberate hydrogen gas. Likewise, strong oxidizing agents oxidize ammonia to elementary nitrogen or other oxidation products. For example, water सूटेबल सॉल्वेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए, वहीं लिक्विड अमोनिया सूटेबल सॉल्वेंट है फॉर रिड्यूसिंग एजेंट. वी फाइंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in their selection as solvent for different type of solutes. Next characteristic feature for non-aqueous solvents is precipitation. On mixing solution of two compounds, if a compound is formed which is insoluble in that system, अगर insoluble है उसमें कोई कंपाउंड तो वो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो जाएगा. प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेप बनना, उस प्रोडक्ट insoluble है सॉल्यूशन में. The solubilities of the reactants and the products are mainly dependent upon the nature of the solvents. Solvents की नेचर पर ही डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट सॉल्युबल रहेंगे या इनसॉल्युबल रहेंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा. By changing the solvent, the product from a given set of reactants can be completely changed, and in same cases reaction may be reversed. solvent change करते ही कई बार reverse reaction हो जाती है, कई बार reaction नहीं होती और कई बार उसमें precipitation process हो जाता है. For example, in aqueous solution silver nitrate and barium chloride, सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके एक सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं behind barium nitrate in solution, whereas in liquid ammonia solution silver chloride combined with barium nitrate to give a precipitate of barium chloride, leaving silver nitrate in solution. जब बेरियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में रह रहा है,
ये रिएक्शन हो रही है वाटर में, ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन जिसमें सिल्वर क्लोराइड बेरियम नाइट्रेट के साथ यही रिएक्शन रिवर्स है। इसको देखा जाए तो लिक्विड अमोनिया में ये बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना रहा है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में है। तो इस तरीके से सॉल्वेंट चेंज होते ही रिएक्शंस चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सॉल्ट फॉर्मेशन। Salts are formed by the reaction of an acid with a base. For almost complete reaction, the appropriate acid and base should be sufficiently strong, and it is known that the strength of an acid and a base depends upon the nature of solvent. Thus, before preparing a particular salt, the selection of an appropriate solvent is necessary. Precipitation of nitronium perchloride NO2 plus ClO4 minus is a good example. It is a salt formed by the reaction of the very strong acid perchloric acid HClO4 with the exceedingly weak base. This reaction cannot be carried out in water because nitronium ion NO2 plus cannot exist in aqueous solution as it gives HNO3 and H3O plus in water. नाइट्रोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड H3O प्लस दे देता है, इसलिए नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन कभी भी एक्वस मीडियम में नहीं होती है। This reaction can however be carried out in a strongly acidic solvent like anhydrous sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन हो जाती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो इन लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। थैंक यू।